this sin x, question number 17 देखो, sin x plus cos x divided by sin x minus cos x. So you can call it as y or f of x. Both are same. We can call it as f of x or y. Now it is of the form u upon v form. Quotient rule, you have to apply the quotient rule. So, derivative f dash x is equal to denominator into, so sin x minus cos x into derivative of numerator sin x plus cos x minus numerator into sin x plus cos x into derivative of denominator sin x minus cos x the whole divided by denominator square sin x minus cos x the whole square. So sin x minus cos x into derivative sin x plus cos x. So derivative sin x is cos x plus derivative cos x is minus sin x minus sin x plus cos x into derivative sin x, that is cos x, minus derivative cos x minus sin x. So minus minus sin x, it is plus sin x. The whole divided by sin x minus cos x the whole square. So cos x minus, so this is equals, if you can see here, if you take a minus common here into here, if you take a minus common, what you're getting is again sin x minus cos x. So up you can see that it is minus plus into minus minus sin x minus cos x into sin x minus cos x is sin x minus cos x the whole square minus then sin x plus cos x into cos x plus sin, that is sin x plus cos x the whole square the whole divided by sin x minus cos x the whole square. So which is equals minus is outside, a minus b the whole square, so a square minus 2ab, so 2 sin x cos x plus b square cos square x हो गया minus again sin x plus cos x the whole square, that is sin square x plus a square plus 2ab 2 sin x cos x plus cos square x the whole divided by sin x minus cos x the whole square. अभी आप देखेंगे तो इधर ये sin square x plus cos square x, that is 1. Here be sin square x plus cos square x, that is 1. So 1 minus is outside. So minus 1, and here also minus is outside. So minus 1. So minus 1 minus 1, it is minus 2. बाकी you can see that इधर एक minus minus, so plus 2 sin x cos x, and here minus then इधर 2 sin x cos, वो कैंसिल हो जाएगा. सो आपको सिर्फ न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करने को सिर्फ -2 ही मिलेगा. सो -2 डिवाइडेड बाय sin x minus cos x the whole square. Got it? Yes, sir. Yeah. So it's, so 18 also you can do it the same way, like same time, because you can apply quotient rule. Here also apply quotient rule. The same thing only. So I don't need to do all these things. So here they go. This is y is equal to sine to the power nx. So this is nothing but sine x to the power n. So derivative y dash is equal to, this is of the form, this is of the form x to the power en X to form में power है. n. So n into sin x to the power
n minus 1, n minus 1 देन आपने जो into सिंगल एक्सप्रेशन कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से sin x मल्टीप्लाई करना इनटू डेरिवेटिव साइन एक्स, दैट इज n इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1, और आप ऐसे लिख sin सकते x हैं to the साइन power n n minus माइनस 1 सॉरी साइन n minus 1 x into derivative of sin x is cos x. cos Okay, all right. So like that you can do that question. Next question देखो, इधर भी x divided by sin x, you have to apply quotient rule. This is of the form u upon v form. Quotient rule apply करना पड़ेगा. So you can call it as say your y. So dy by dx derivative is equal to denominator into sin nx, sin to the power nx into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square. Okay, derivative of x is equal to 1. So 1 into sin nx, मतलब sin to the power nx और sin x to the power n minus x into, ये हमने अभी देखा, it is n into, just 1 second, one call is coming, x into then n into, ये हमने अभी देखा sin x to the power n minus 1, so sin x to the power n minus 1, then अभी हमेशा वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने x के जगह sin x कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, उसका डेरिवेटिव cos x, अब एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो समझ में आने के लिए बार बार लिखते था वो डिवाइडेड बाय, तो sin टू द पावर देखो a टू द पावर m द होल टू द पावर n क्या है, a टू द पावर m इंटू n, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin टू द पावर 2nx, करेक्ट, अंडरस्टूड, हेलो hello, yes sir yeah, and if you want you can simplify, like if you want you can take sin to the power n minus 1 x common, so first take sin x बाकी आएगा minus nx cos x the whole divided by sin to the power 2nx or sin x to the power 2n, or you can leave it like sin x to the power n the whole to the power 2. Clear? yes sir Yeah. So एक और question देखो, this is y is equal to x to the power 4 into 5 sin x minus 3 cos x. एक तो आप चाहिए तो इसको आप u कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप v कंसिडर कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, अदरवाइज यू जस्ट multiply with x to the power 4 and this, then minus again multiply with x to the power 4, and you can write it as a two expressions, then also you can apply, like say for example if you write like that it will become x to the power 4 into 5 sin x, so it is 5x to the power 4 sin x plus into minus minus 3x to the power 4 cos x. अभी आपको दो एक्सप्रेशन मिला, फर्स्ट एक्सप्रेशन minus second expression, then you have to find the derivative of first expression minus derivative of second expression, but उधर इधर भी आपको again you have to apply product rule because it is product of two functions, understood? So it is अच्छा है कि आप इधर से अप्लाई करो तो कोई इश्यू नहीं, हम इसका बाकी इधर से करेंगे, so y dash is equal to y dash derivative is equal to first derivative of first, that means x to the power 4 का derivative into second ऐसे लिखा 5 sin x minus 3 cos x plus first into then 5 sin x minus 3 cos x का
derivative. So x to the power 4 का derivative 4 into x to the power 3. बाकी 5 sin x minus 3 cos x plus x to the power 4 into, अब इसका derivative. So it is sum of two functions or difference of two functions. So first function का derivative minus second function का derivative. अभी first का derivative, first is again constant into function. So constant into, so 5 into derivative sin x, that is cos x, minus again 3 into derivative cos x minus sin x. So minus minus है plus हो जाएगा. So 3 sin x. Okay. And now if you want, you can expand and simplify if possible. Like this is 5 into 4, 20 x to the power 3 sin x minus 12 x to the power 3 cos x plus 5 x to the power 4 cos x plus 3 x to the power 4 sin x. Okay. So that's enough. It's all okay. Okay. So any other question you would like to do from here? So okay, like almost okay. ये वाला एक बार देखेंगे. So this is your y. Okay. So again, it is of the form, first of all, u by v form. So you have to apply quotient rule. So derivative is equal to denominator into derivative of numerator, that is x square cos pi by 4 minus numerator into x square cos pi by 4 into derivative of denominator. So denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square sin x का square. So which is sin x into, देखो ये cos pi by 4, cos pi by 4 is 1 by root 2. It is constant, right? Yes, sir. Yeah, so you can just 1 by root 2 constant. The derivative of x square is 2x. 2x. No, minus, this is root 2 1 by cancel root 2 x square, because cos pi by 4 is 1 by root 2. अगर वो पाई बाई 4 की जगह x है तो उधर आपको प्रोडक्ट रूल, इधर आपको प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई करना पड़ता था. इधर x स्क्वायर इंटू कॉस x, ऐसे तो इधर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है. बट cos pi by 4 is 1 by root 2, it is constant, so you can take the constant outside. 1 by root 2 into derivative x square is 2x minus cos pi by 4 1 by root 2 x square ऐसे लिखा. Then derivative sin x is cos x the whole divided by sin x का square sin square x. Okay, that is enough. Okay, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है उधर. Understood? Any doubt? No, sir. No, sir. So that's all. बाकी remaining questions you can do. And there is one question. Let me take it. This question. Look at this question. You have to find the derivative of, ये textbook का question है, sin x plus cos x using first principle. So normally देखो y is equal to sin x plus cos x. So what is the derivative? Derivative sin x is cos x plus cos x का derivative minus sin x. So answer will be cos x minus sin x. Here also you will get the answer cos x minus sin x. Look at that after these many steps. But either question you have to apply first principle. So you have to apply first principle. Okay. So look at that. F of x plus h minus f of x divided by h as h goes to 0. So इधर उन्होंने भूल गया, इधर limit h goes to 0 है. Now, so f of x plus h मतलब sin x के जगह x plus sin x plus h plus cos x plus h. That is your
f of x plus h माइनस f of x. So माइनस ऐसे आएगा f of x sin x plus cos x. उन्होंने माइनस से ओपन करके लिखा डिवाइडेड बाई h. नाउ ये देखो साइन x प्लस है, साइन a प्लस बी साइन a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला अप्लाई किया. साइन a प्लस बी इज साइन a cos b प्लस cos a sin b. सो उतना एक्सपांड किया. This one sin a, this is sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b. Then again cos, this is cos a plus b, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Some formula apply किया. Then बाकी minus sin x minus cos x. And then in the next step इधर तो एक sin x, इसमें से sin x कॉमन है, इसमें से भी sin h कॉमन है. So from the second and fourth term you took sin h common, बाकी cos x minus sin x, बाकी इधर एक cos x आएगा, इधर एक minus sin x आएगा. So that is why the first term is sin x into cos x minus sin h. Then next two terms है, इधर तो एक sin x कॉमन है, then इधर भी एक sin x है, मैंने दो टिक किया उधर. So उसमें से sin x कॉमन निकाला, so sin x कॉमन निकाला, so बाकी इधर cos x एंड इधर -1. देन बाकी जो टर्म है उसमें से आप cos x कॉमन निकाला, cos x. so cos x कॉमन निकालने के बाद आपको cos h -1 लिखे मिलेगा डिवाइडेड बाय h. ठीक है. देन लिमिट अप्लाई करना. लिमिट अप्लाई करने के टाइम क्या किया, सबको h से डिवाइड कर रहे हैं, सभी टर्म को h से डिवाइड कर देना. सो फर्स्ट टर्म को h से डिवाइड किया, सो उसमें से sin h बाई h साथ में लिखा, देन cos x माइनस sin x प्लस इसमें से भी इसको भी h से डिवाइड किया, sin h इंटू cos h माइनस 1 डिवाइड बाई h प्लस थर्ड टर्म को भी h से डिवाइड किया. सो जब लिमिट अप्लाई करेगा cos h माइनस 1 बाई h, इसका लिमिट हमने जैसे देखा था 0 था, लिमिट 1 माइनस cos x बाई ex as x goes to 0 this is equal to 0 हमने देखा था. so 1 माइनस cos x के जगह आप cos x माइनस 1 लिखेंगे तो भी एक नेगेटिव बाहर आएगा, दैट्स ऑल राइट. सो ये वाला लिमिट, इसका लिमिट किधर जाएगा, 0 में जाएगा, इसका लिमिट किधर जाएगा, 0 में जाएगा. सो cos x इंटू 0, इधर sin x इंटू 0, सो सेकेंड एंड थर्ड टर्म 0 हो जाएगा. फर्स्ट टर्म में दिस sin x बाई h गोज टू 1, so बाकी 1 into, so 1 into cos x minus sin x, that is equal to cos x minus sin x. Got it? Understood? Yes sir. Yeah, so this questions may ask several times, this question asked like using first principle. डायरेक्ट करेंगे तो बहुत इजी है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से करना जैसे फॉर्मूला अप्लाई कर देना. so इधर देखो फॉर्मूला अप्लाई किया, सम फॉर्मूला अप्लाई किया, देन कॉमन निकाला, देन लिमिट अप्लाई किया, बहुत ज्यादा चीज आ गई इधर. ठीक है. इधर जो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट, दोनों ट्रिग्नोमेट्री लिमिट आ गया. हाँ ओके ओके. देन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके Okay sir. ठीक है. देन टेक केयर, बाय बाय.